Alright traders, so market what just did is basically निफ्टी जो है उसने फ्राइडे का जो है वो लो ब्रेक किया, ब्रेक डाउन किया, अच्छा खासा मूव भी किया एट अराउंड लाइक 40-50 पॉइंट्स का मूव किया अच्छे से। ठीक है, बैंक निफ्टी भी कोशिश कर रहा था थोड़ा बहुत नीचे जाने की, अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखो तो, बट देन वहीं से अच्छा खासा बाइंग प्रेशर आया। राइट, वी हैड अ वेरी गुड बाइंग प्रेशर कमिंग इन एंड नाउ दिस इज द रेजिस्टेंस वी आर वेटिंग फॉर। राइट, फ्राइडे का मार्केट अगर आप देखो तो दिस इज एग्जैक्टली वेयर दो बार हमने, ऑब्वियसली लास्ट की कैंडल जो है वो क्लोज हुई थी यहाँ पे, और यहाँ पे हमने एक बार रेजिस्टेंस लिया था एट द सेम पॉइंट इन टाइम। यहाँ पे अगर आप देखो, ये हमने यहाँ पे एक सपोर्ट भी लिया हुआ है। राइट, एक वेरी गुड सपोर्ट भी यहाँ पे लिया हुआ है। सो इफ वी सस्टेन दिस पर्टिकुलर ब्रेकआउट, द वेरी नेक्स्ट स्टॉप फॉर बैंक निफ्टी वुड बी लाइक एटलीस्ट एट 38,000। राइट, सो 37,337 के आसपास का, जो 340 के आसपास का ब्रेकआउट है, इट विल स्टॉप एट 38,000 ओनली, विच इज लाइक ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स मूव फॉर अस। सो वेट करेंगे। अब ऑब्वियसली मूव एक बार में तो होगा नहीं, इट विल टेक टाइम। राइट, थोड़ा बहुत यहाँ तक आता है मार्केट, अगर ऑब्वियसली अगर बहुत बड़ा मूव करना है मार्केट को तो अभी के अभी ब्रेकआउट कर देगा सीधे जाके नेक्स्ट एक दो तीन कैंडल में ही। राइट, लेकिन अगर मार्केट को एक छोटा सा माइनर सा मूव करना है यहाँ से, सो व्हाट इट विल डू इज मेजरली कि 11 10:30 11 बजे तक के आसपास यहाँ पे हम लोग टाइम पास करेंगे। राइट, उसके बाद वी मे ब्रेकआउट एंड दैट ब्रेकआउट विल डू लाइक गिव अस लाइक इन maybe 250 300 points का momentum. So that is what we are waiting for in बैंक निफ्टी। सो ट्रेडर्स मार्केट को अभी अगर आप देखो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं, एक बार 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ। दिस इज 3 मिनट्स, राइट, 5 मिनट पे शिफ्ट करते हैं। सो अगर आप एक चीज देखोगे यहाँ पे तो मोर ऑफ अ डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न काइंड ऑफ चीज यहाँ पे बन रही है। लेट मी जस्ट क्लियर आउट अ फ्यू थिंग्स। यहाँ पे मैं आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करके बताता हूँ। जस्ट लुक एट दिस, दिस इज अ क्लियर एंड क्लियर साइन ऑफ this is very clear, crystal clear descending triangle pattern, right? एक बहुत ही अच्छा डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हमको दिख रहा है यहाँ पे, राइट। बट देखो अब यहाँ पे मेरी एंट्री तो वैसे यहीं पे बनती है बिलो दिस पर्टिकुलर लो, लुकिंग एट द पैटर्न। लेकिन एट द सेम पॉइंट इन टाइम अगर यहाँ पे आप देखो तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे या कहीं पे भी देखो तो फ्राइडे का जो मार्केट था, एज वी डिस्कस्ड इन मॉर्निंग एज वेल, ये वाला जो सपोर्ट है इसका ब्रेक होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। मार्केट ये ब्रेक करके यहाँ तक तो आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से लेके मार्केट वापस सपोर्ट लेता है एंड देन इफ वी गो बैक अगेन अप, that is not something I want it to do, right? So basically ठीक है, चलेगा, हम लोग थोड़े बहुत पॉइंट्स लूज कर देते हैं, थोड़ा सा ऐसे हमारा बड़ा आ जाता है, 5 मिनट्स पे शिफ्ट होके फिर जो भी क्लोजिंग है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग स्टॉप लॉस हमारा शिफ्ट कर देंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ आई वुड नॉट लाइक टू एंटर राइट ओवर हियर। मे बी व्हाट आई वुड हैव डन इज कि अगर थोड़ा सा भी मॉर्निंग का कोई ट्रेड होता हमारा या कोई भी प्रॉफिट्स होते थोड़े बहुत भी हमारे पास आज के दिन के, तो उसमें से थोड़ा सा रिस्क लेके लाइक हाफ अ क्वांटिटी या क्वार्टर क्वांटिटी हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते थे, एटलीस्ट लाइक 100 क्वांटिटी यहाँ पे मैं ऐड कर लेता। बट एज ऑफ नाउ आई डोंट थिंक सो आई एम गोइंग टू डू दैट until and unless we don't break out on this particular support level, right? जैसे ही ब्रेक डाउन होता है उसके बाद देखते हैं क्या ट्रेड होता है, क्या ट्रेड बनता है, क्या नहीं बनता है। एनीवेज आई हैव एडेड माय ऑप्शंस ओवर हियर, 37,605 एंड 37,500 के पुट ऑप्शंस दोनों मैंने ऐड कर लिए हैं। बेसिकली व्हाट आई एम वेटिंग फॉर एंड व्हाट आई एम एमिंग फॉर सिंपल ट्रेडर्स की एक अच्छा खासा मूव आ जाए, वाइड मूव आ जाए, राइट। आई वांट इट टू गो वाइड लाइक एनीथिंग, राइट। बिकॉज देखो रीजन क्या है, 2 दिन से यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है एंड इफ यू ब्रेक डाउन ऑन दिस पर्टिकुलर सपोर्ट, सेकंड हाफ का टाइम बचेगा ऑब्वियसली हमारे पास मॉर्निंग से, तो ऑब्वियसली वी आर कमिंग बैक डाउन ऑन दी साइड, दी मार्केट है। ब्रेक डाउन होने के बाद सेकंड हाफ का टाइम बचेगा एंड इफ यू गो गुड ओवर फ्रॉम हेयर, राइट, so in the money options में हम लोग enter करेंगे and that is exactly where we'll be able to capture the whole momentum, अच्छे से capture कर पाएंगे, राइट। ऑल्दो अगर आप देखो तो यहाँ पे एक भी कैंडल 15 मिनट्स की क्लोज नहीं हो पा रही थी इसके नीचे, और जस्ट नाउ एक कैंडल ने क्लोज किया है, तो इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड साइन ऑफ ब्रेक डाउन। बट लेट्स वेट, we'll just wait for 243 37,243 to be taken down. That's where we are going to enter, राइट। अभी ये इसी कैंडल में भी हो सकता है या फिर नेक्स्ट कैंडल में भी हो सकता है, whenever the entry triggers I'll let you know, just let it take support once from over here, सीधे ही ब्रेक कर देगा तो एंट्री मिस कर देंगे मे बी हम लोग। एंड ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर हाई के ऊपर एंटर करना इज स्टुपिडिटी काइंड ऑफ अ थिंग, क्योंकि कल ये हाई लगा था, फ्राइडे के दिन ये हाई लगा था, नॉट टुडे, राइट। इट वी जस्ट ब्रोक डाउन, we haven't yet, right? We are just taking support
Just let it break down and market price पे तो enter नहीं करेंगे. That will be a bit too much of risky for us. Market is trading at what 37,280, right? 37,400 is also something we can plan to enter. All right, the breakdown has just happened and I'm going to enter 400 quantity. देखते हैं. So don't want to miss out the move. So maybe थोड़ा सा जल्दी हमको एंटर करना पड़ जाएगा. वाइल्ड एंट्री लेनी पड़ेगी शायद. Alright, I'm going to enter 400 quantity right over here at market price. 459 is where our orders got executed. And मैं इसका stop loss लगा देता हूँ at the least of 50 points. Right? So it will be around 400 and 409, right? Yeah, the stop loss would be 409. का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस है. अभी प्रॉफिट चल रहा है 5-6 हज़ार ट्रेड लेते ही पहले हम लोग स्टॉप लॉस लगा देते हैं. Then we'll talk about target and everything else. All right. So अब obviously यहाँ पे volatility create हो भी सकती है और तुरंत ही ये वापस जाके it can hit a stop loss as well. इसलिए मैंने 50 points का लगाया rather than a 40 point as well. Right. So basically what we're looking for from over here is simple traders. कि देखो Nifty is going good since morning. Nifty is going very good down. Right. वहाँ पे भी एक opportunity figure out की थी मैंने but I didn't enter because morning में volatility इतनी थी. Right. So basically what we want now in Bank Nifty is at least 1:2 का trade. ठीक है 50 points का SL है तो at least like 100 point का target तो हम लोग यहाँ पे प्लान कर ही सकते हैं depending upon market situation कहाँ कैसा support लेता है. Right. But अगर chart हम लोग देखें थोड़ा सा गौर से तो the very next support is over here. Right. थोड़ा और पीछे जाके भी देखेंगे हम for sure definitely. Right. So the very next support I can see is somewhere over here only. और बीच में एक minute सा support है at around 37,000 as well. Obviously, psychological number as a support act करते हैं, but it happens more near expiry, not this soon. इतना जल्दी वो नहीं करते हैं. But anyways अगर हम लोग 37,000 तक भी support लेने चले जाते हैं, then as well around somewhere around what do we call it, we'll be able to like pocket in around 200 points at least over there as well. So देखते हैं at around 18-19,000 rupees 1:1 तो trade हमारा चल रहा है. Not exactly 1:1, 20,000 rupees का risk है हमारा यहाँ पे. तो at around now it's 1:1 का trade चल रहा है. But right away I'm not going to trail my stop loss because कि volatility बहुत ज़्यादा मिलेगी अभी हमको. Right. I'm at least going to wait for like 37,000 to be breached down because we have been waiting for this entry since morning. Right. All right, now it seems to be a very good price to trail our stop loss at. Right. Almost कितना क्या हाई लगाया हमारे इस particular option ने. What is the high it made a high of around, don't know for what reason, यहाँ पे नहीं बता रहा है. एक बार देख लेते हैं आराम से. I believe okay, all right, now it's going anyways. Right. So हमारा जो stop loss रहेगा वो सीधे 460 पे हम लोग लगा देंगे. 460 is where I'm going to put my SL, modify my SL at, and we are receiving 1:1 for sure, more than 1:1 for sure, like right over here, 40,000 rupees, 20,000 rupees का हमारे यहाँ पे risk. Just look at that traders, just look at the market, how crazy they're going down. 41,000, okay, seems good, but I would personally love to hold this trade. वैसे तो ये बहुत wild move है, देखते हैं. राइट थोड़ी वोलेटिलिटी होगी, पीएनएल में भी थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी होगी अब यहाँ पे. राइट वेंट फ्रॉम लाइक 41,000 to 25,000 इन नो टाइम. राइट सो वोलेटिलिटी अब देखने मिलेगी हमको क्योंकि बहुत ज़्यादा एक वाइल्ड मूव से ब्रेक डाउन किया है हमने. सो वी जस्ट डोंट वांट इट टू हिट आवर ट्रेलिंग एसएल. राइट because that's not something a trader should would anyways prefer. बट देखते हैं ऑब्वियसली अगर इसको एक अच्छा मूव करके नीचे जाना है तो ये वापस तो नहीं जा सकता, नहीं ही जाएगा. अगर जाता है तो वी आर आउट एट अ सीटीसी क्योंकि देखो ट्रेड दिस पर्टिकुलर ट्रेड गेव अस लाइक 1:2 ऑलमोस्ट. राइट वो मूव इतना क्रेजी इतना फास्ट था कि वी कुड नॉट बुक, और ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू बुक इट एज वेल, ऑल्दो मैंने मॉर्निंग में बोल दिया आई विल एटलीस्ट वेट
फॉर दिस, और यहाँ पे आके प्राइस कैसे बिहेव करता है 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे, वो देखेंगे हम लोग। उसके बाद मे बी वी विल प्लान इट टू बुक, राइट। उसके बाद मे बी विल प्लान इट टू बुक, बट देखते हैं बिकॉज वी हैव इनफ टाइम, राइट। इफ दिस रिजेक्शन हैपेंस, अगर हम यहाँ से रिजेक्शन काइंड ऑफ थिंग होती है, वी आर आउट फ्रॉम द स्ट्रीट, राइट। ऑलमोस्ट 40 पॉइंट से बचा हुआ है हमारा ऐसे। देखते हैं, होल्ड करते हैं, वेट करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक 5,000 सब्सक्राइबर्स ऑन आवर यूट्यूब, really appreciate it, and such things makes us more aware कि चलो और content बनाते हैं और YouTube videos बनाते हैं, people are loving it. So yeah, such milestones are actually important. पहले मैं सोचता था कि it's totally alright. Going off topic, let it be. Yeah. So what is Nifty doing? Nifty will support us for sure, right? Nifty ने ये जो support था यहाँ पे जो मैंने draw कर रखा था वो भी breach down कर दिया है. So Nifty will support us, right? Just need Nifty to breach down all the supports today. राइट अभी देखो मेजर रीजन हमारे ट्रेड को होल्ड करने का ये भी है ट्रेडर्स की टाइम है हमारे पास, राइट। और इस पर्टिकुलर सपोर्ट को हमने 3 बार टेस्ट किया हुआ है एंड 36,900 तक क्लियर फॉल एक्सपेक्टेड है। 37,000 पे हमने इसलिए भी लगाया हुआ है चार्ट क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सॉर्ट ऑफ रिवर्सल्स एक साइकोलॉजिकल लेवल से मार्केट ले लेता है, राइट। बट व्हेन इट्स अ गुड डे तो it doesn't really matter कि कहाँ पे क्या सपोर्ट है और क्या चीजें हैं, बट एज एन ऑप्शन बायर वी जस्ट हैव टू बी अवेयर इनफ कि कहाँ पे पोजीशंस को एक्चुअली निकाल सकते हैं, कहाँ पे नहीं निकालना है। We just have to be aware enough. That is the reason being. All right, so we have like 24-25,000 rupees running profits. Let's hold on. Would love if Bank Nifty just breaches down. ये कैंडल जो है अगर इस कैंडल का लो तोड़ देती है तो हमारा स्टॉप लॉस सीधे यहाँ पे आ सकता है, और मे बी वी ऑलरेडी हैव स्टॉप लॉस ओवर देयर. Let's check. Yeah, we already have our asset over there. Just look at that. In the money option went pretty wild, made a high of 566 as well, right? It went pretty wild. Let's watch, wait, let's watch how it goes. ये हमने इसलिए लगा रखा है बिकॉज नेक्स्ट जब भी हम ट्रेल करें हमारा ऐसे तो हमको पता हो क्या करना है, तुरंत कर सकते हैं ऐसा, या फिर मार्केट पे बुक करनी हुई पोजीशन की यार नहीं जा रहा है मार्केट कहीं. In that case as well, how much funds are used? Actually, I've withdrawn some capital out of this account से, तो around 1.83 funds are used. 1 लाख का फंड बचा हुआ है. चलो let's hold on now. देखो अगर सिर्फ और सिर्फ, excuse me, I don't know what just happened. Let it be. We'll open another window over here. All right, it seems good for us. Where is my chart? All right, this is the chart we were following, and yeah, it is trading at around price only. Let's hold traders. Let's hold. We just need Bank Nifty to breach down this low once again. Our SL is at 460 somewhere. What is the low of this last candle? 456 it is. The target is just 100 more points down from here, and that's it here. That's the support we have. So we are holding out, right? As we talked about it, we just need Nifty to support us and we are good to go. We have around 40 to 43,000 rupees profit running, 42,000 rupees profit running.
And you guys know I'm not a trader who will hold it for long enough. जैसे कुछ दिखा, we will book it. देखते हैं चलो। अब जो है ऑप्शन हमारा काफी दूर जा चुका है हमारी एंट्री से, सो वी कैन होल्ड इट। एग्जिट अगर अभी मिलता है तो अराउंड सीटीसी लेके जाएंगे, नहीं तो फिर होल्ड करते हैं फॉर गुड टारगेट। लेट्स सी, क्योंकि सेकेंड हाफ में व्हेनेवर मार्केट ब्रेक्स डाउन सेकेंड हाफ इट टेंड्स टू गो गुड। Alright, what is the possible support, next support for Nifty if we break down on this one as well? Let's figure that out. I think the very next would be this one. Let us also check volumes, if the volumes are supportive or not, because we need continuous good volumes. Yeah, in the last candle the volumes were pretty good. Now anything is a good profit for us. We risked 20k, we are receiving more than 40, so anything will be a good profit for us. Above 40, right? Even above 20 is a good profit for us. Let us plan if we can trail any more further. अगर market at least like in यहाँ से और 50 points हमको देता है 600 पे, either we book or trade is what I'm planning. और अगर और strength दिखती है अगर हमको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, right? अगर और more further strength अगर हमको यहाँ से दिखती है तो we can even trail our SL at like 525. Yeah, I think I'm going to trail my SL or maybe just book close down positions. चलो, so हम लोग हमारा जो ट्रेड है उसको ये वाली जो कैंडल है इसके हाई पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल कर देंगे, सो दैट एटलीस्ट वी गेट होम समथिंग आउट ऑफ द प्रॉफिट्स वी हैव रनिंग, राइट? सो यहाँ से 525 is where I'm going to trail my stop loss at, which is like 40 points, considerable enough. Or else 525 is where I'm going to trail my sell at, yes. So it will be like in at least we'll be taking home 50 points. 525 is it? Yeah, 525 पे है हमारा स्टॉप लॉस, 524 पे कर देते हैं, उसका लो टूटेगा तब हमारा ऐसे लाएगा। एक पॉइंट से डजंट मैटर इन ऑप्शंस टू बी ऑनेस्ट। यहाँ से 40 पॉइंट डाउन वी हैव ट्रेल्ड ओवर एसएल एट, तो अराउंड 20,000 रुपीज एटलीस्ट हम लोग यहाँ से लेके जा सकते हैं, राइट? या तो अगर बैंक निफ्टी जो है ये वाला लो अपना तोड़ देता है, ये वाला जो हाई है ये अपना तोड़ देता है, तो हमारा एसएल आ जाएगा, और एल्स वी होल्ड दिस ट्रेड। लेट्स सी हाउ इट गोस फ्रॉम हियर। Alright, we just hit our trailing stop loss. I think हमने थोड़ी जल्दी की या नहीं की, nobody knows that.
we had around 45,000 rupees running. Could have booked it right over there as well, but we decided कि चलो ठीक है, और अगर momentum further यहाँ से हो जाता है तो we'll be able to capture that as well, right? So that's what for we trail our SL at. And नहीं हुआ जैसा we planned. It didn't happen according to us. Obviously nothing is going to happen according to what we planned, right? So we hit a stop loss and we booked half of what we had running, right? And this is option buying for you traders, right? आप लोग literally दिमाग खराब हो जाता है whenever this kind of things happen, right? जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा PNL आप लेके जाओ. What's running is not your profit, what's booked is your profit, right? जरूरी नहीं है आप पूरा पूरा PNL लेके जाओ. And emotionally this could have been my, I could have booked it like 45,000 rupees as well, 20,000 rupees more. But if market would have gone more down from here without hitting my trailing SL, मेरा SL, trailing SL बिना खाए हमारा market more further down जाता, तो 25k की जगह या 45k की जगह this profits could have been around you know uh, 60, 70, 80, 90, anything, right? Depends on what we could have holded. Maximum this is what I could have holded 100 more, 100 more points from here, right? So so we have booked our trade at 525, and now it really doesn't matter to us whether market goes more bearish from over here or not, right? It can go, definitely, for sure, chances हर चीज के होते हैं. But देखो, एक बार एक ट्रेड ने आपको more than 150 120 पॉइंट्स दे दिए, learn to take something home from there, right? अब यहाँ से it can fail as well और मार्केट वापस ऊपर के घूम के वापस भी चला जा सकता है, right? You cannot be like कि आपने ट्रेलिंग एसएल जल्दी ट्रेल कर लिया, कॉस्ट पे ही रहने देते और फिर मार्केट दिन भर अगर नीचे आ जाता तो बहुत सारा प्रॉफिट हो जाता, आपके महीने भर का प्रॉफिट एक दिन में हो जाता. एंड थिंग्स लाइक दैट आई डोंट बिलीव इट. क्यों? क्योंकि रीजन इसका सिंपल है ट्रेडर्स, आई एम नॉट sort of telling you this because हमने यहाँ पे book किया है. Everything happened live in front of you. We booked more than what we risked, right? 20,000 का risk था, 25,000 rupees book किया और अभी hold करते, probability इस चीज की बहुत ज्यादा है, right? है भी कि मार्केट यहाँ से रिवर्स मार के ट्रेलिंग एसएल भी हमारा जो कॉस्ट का है वहां तक कभी खा के फिर वापस नीचे आए, वो भी तो चीजें हो ही सकती है ना, राइट? सो एज एन ऑप्शन बायर व्हाट वी एम फॉर इज सिंपल कि छोटे छोटे ट्रेड्स, right? More than 1:1k trades, we keep booking for more time, right? Over a long period of time. Consistency is what we seek more for, not huge profits, right? Huge profits भी आएंगे, there will be days, right? अब देखो, क्योंकि last to last हमारा जो last trade था, we booked 25,000 rupees in that trade, right? So that was the reason for me to hold, right? Last to last वाला trade अगर मेरा ऐसे खा के हुआ होता, right? Stop loss खाया होता मैंने, तो मैं 45 पे सीधे ही book कर लेता trade, राइट? या इवन 30-35 के आसपास मैं उसको ट्रेड को बुक कर लेता बाय द टाइम दिस पर्टिकुलर कैंडल स्टार्टेड बिकमिंग ग्रीन. जैसे ये कैंडल ग्रीन होनी शुरू हुई, मैं मेरा ट्रेड सीधा वहां पे कर सकता था. आई डिडंट डू इट. क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम वी बुक प्रॉफिट, नाउ आल्सो वी आर बुकिंग प्रॉफिट. ऑलराइट, या नाउ इट इज गोइंग गुड, इज गोइंग बैक. लेट्स सी इफ यू फाइंड एनी पर्टिकुलर मोर अपॉर्चुनिटी. कुछ तो बुक कर ही लिया है हमने और इसी में से रिस्क करके और ट्रेड कर भी सकता है, और इट्स डन फॉर द डे. सो